These are the primary steps of a principal component analysis algorithm. The first thing is we center the data around 0. This is in order to calculate the mean. This mean will help us calculate the covariance matrix. Once we have the covariance matrix, then we find the eigenvectors and the eigenvalues. And using these eigenvectors, we can then calculate the principal components. So we apply a transformation G using these eigenvalues and vectors, and then we create the alternate or corresponding principal components. We look at all of these in detail next. We use this example in order to understand how a PCA works. Here is the original data where you can see the spread of data on this X and Y axis. Here is the origin or the 0, 0 point, and the values are spread evenly in both the directions. So these are the values for X, 2.5, 0.5, 2.2, and up until 1.2, and the corresponding Y values. The first step of PCA was to calculate the mean of these values or the center point so that we can find the spread of each of these in themselves and we can find the spread of these in correspondence to one another. Okay, so we are calculating the mean or the central value so that we can see that इनका अपना spread कितना है, variance कितनी है किसी भी variable की, और फिर ये एक दूसरे से किस तरह से relate हो रहे हैं, and उसके लिए we'll need to find the covariance matrix. Mean calculation is a simple process where you take all of these values, you sum these values, and divide those by the total number of values you have. So in this case, we've got 10 values. So I add up all of these values, the X values, and I get a 18.1 result, and I divide that by 10 to get the mean or central value of X as 1.81. Similarly, I calculate the central value of Y as 1.91. These are the mean values right now that I need to use in order to shift my data or readjust my data so that it is now centered around the 0 or the origin point. Let me refer back to the previous slide. Over here, you see that the data, even though it's starting from origin, its spread is away from origin. So what we are technically doing is we are making sure that the values are now centered around the origin or this one. ठीक है, हमने क्या हमने जो ओरिजिनल वैल्यूज थी उनमें से मीन निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया. तो अब हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट वाला फैक्टर खत्म हो गया और जो अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट की लाइन बच जाती है, उस कोऑर्डिनेट की लाइन के ऊपर हमारा डाटा सेंटर हो जाए. तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग वी नीडेड टू डू. वी नीडेड टू सेंटर आवर डाटा ऑन द ओरिजिन. The X bar and Y bar values are now calculated as such that from each of this value, for example 2.5, I subtract the mean value. 2.5 में से मैंने 1.81 निकाल लिया, तो जो मेरे पास नई value आई, this value is centered around your origin or centered around 0, let's say. तो अब ये mean निकाल के सिर्फ उसका मेरे पास magnitude रह गया. ठीक है, तो इसी तरह we do that for all of our examples. 0.5 minus 1.81, 1.31, 2.2 minus 1.81, 0.39, 1.9 minus 1.8, 0.009, and so on and so forth. So we get some values for X bar or data centered, X is data centered around 0. And then we get some values for Y bar where we have Y's data centered around 0. The next step is calculation of the covariance matrix. Now, this is something that we did once in class, but I'd like you to do this again at this part because the more you run these with hand, the better understanding you have of all of these. So I'd appreciate if all of you can get your notebooks by this time and do these steps alongside. Covariance matrix कंप्लीट आइडिया यही है कि आपने देखना है कि हमारे पास वेरिएबल्स का स्प्रेड कितना है एंड व्हाई वर वी मेजरिंग दैट टू बिगिन विद. हमारा मकसद ये था
कि हम जब PCA कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने कहा था कि अगर ओरिजिनल डाटा का स्प्रेड इस तरह से है तो हमें वो वाली डिमेंशंस चाहिए जो इस डाटा के ऊपर इस तरह से बन जाएगी सो दैट वी कैन गेट दी अचीव द मैक्सिमम स्प्रेड डिमेंशन। ठीक है, हम नई जो डिमेंशंस क्रिएट कर रहे थे, हम x1 और x2 डिमेंशन से चेंज हो रहे थे z1 डिमेंशन में, तो वी सेड के z1 डिमेंशन हमने इस तरह से बनानी है कि वो डाटा का मैक्सिमम स्प्रेड कैप्चर करती है। ठीक है, और फिर इसके परपेंडिकुलर हम कोई दूसरी अपनी डिमेंशन क्रिएट करेंगे और फिर इन दोनों के परपेंडिकुलर कोई अपनी तीसरी डिमेंशन क्रिएट करेंगे। तो अब वो जो मैक्सिमम स्प्रेड हमें कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है, in order for that we are using the covariance matrix and using the variance values। ठीक है, तो वहाँ that हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो था जिसके लिए हमने ये पहले दो स्टेप्स किए। The first was calculating the mean values, the second was centering our data with respect to that mean, centering our data near to the zero। Okay, given this formula of covariance matrix, where we take every value xi and subtract it from its mean value, and every value of yi and subtract its mean value from it, we'll be calculating this matrix। तो ये जो मेरे पास values आ गई हैं x bar and y bar, actually these are represented over here। ठीक है, तो ये जो x dash, sorry not x bar is the mean here, तो x डैश और y डैश की जो वैल्यूज मैंने निकाली थी वो मैंने यहाँ प्लेस कर दी। ठीक है, तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 4.9, फिर इसी तरह -1.31 मल्टीप्लाइड बाय -1.21, and for all of these pairs of values I'll do this multiplication and I'll then create a complete summation over all of these। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वी टेकिंग ईच वन ऑफ दीज वैल्यूज वन बाय वन, ये वी गॉट द पेयर्स और इन पेयर ऑफ वैल्यूज को वी आर मल्टीप्लाइंग देम विद वन अनदर, और जब ये हम सारी मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं तो वी डू अ समेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज। दिस समेशन इज देन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज वी हैव। ठीक है, और n और n-1 का फर्क भी आई होप आपको याद हो। जब हम कंप्लीट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वी टेक n और डिवीजन बाय n करते हैं हम, और जब हम सैंपल की बात करते हैं तो हम डिवीजन बाय n-1 कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी सिंस वी आर टेकिंग द सैंपल तो विल डू अ डिवीजन बाय 1। तो प्लगिंग इन द वैल्यूज ओवर हियर, इस x बार और x डैश और y डैश की वैल्यूज पे हमारे पास ये कोवेरियंस निकल आती है x and y की। The thing I'd like you to note over here is that these values are same, so the relationship between these is identical, or the covariance between x and y and x is essentially the same। ठीक है, since we're not taking any direction or anything, तो जो भी वैल्यू आपकी कोवेरियंस की निकलती है that's the same for x from y to x। ये जो these other two values 0.616555, this is variance of x, and 0.7165, this is variance of y। ठीक है, so x's covariance with itself is known as variance of x or spread of x, and similarly y's covariance with itself is spread of y। ठीक है, so that's how we calculate the covariance matrix: variance of x, covariance of y, covariance of x and y, covariance of x and y, and then variance of y। Next step is the calculation of these eigenvectors and eigenvalues of the covariance matrix। ठीक है, we will not be going into a detail of how we calculate these eigenvalues and eigenvectors, but a little summarization, or let's say recap over here, is necessary. Since the size of the covariance matrix is n by n, so there would be n eigenvalues। ठीक है,
आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ये लीनियर अलजेब्रा का वही वाला कॉन्सेप्ट है, आप बेशक उधर से जाकर इसको रिवाइज कर लें, यहाँ पे उसकी डिटेल देना हमारे स्कोप से बाहर है. What I tell you is that since we have a 2x2 matrix, 2x2 covariance matrix, so we'll have at least 2 eigenvalues, ठीक है, and 2 eigenvectors. तो हमारे पास eigenvectors भी 2 आएंगे, ठीक है, और इसी तरह आइगन वैल्यूज भी 2 आएंगे. सो वी हैव n आइगन वैल्यूज एंड n आइगन वेक्टर्स. हर वेक्टर अगेन वुड बी ऑफ द सेम साइज एज वी हैड ईच इंडिविजुअल एलिमेंट इन द कोवेरियंस मैट्रिक्स. तो कोवेरियंस मैट्रिक्स का साइज भी 2x2 था, तो हमारे पास आइगन वेक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनता है उसको भी सिमिलर साइज का. आसान अल्फाज में जितने आपके पास फीचर्स होंगे उतने ही हमारे पास आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है. हर फीचर के कॉरेस्पॉन्डिंग कोवेरियंस मैट्रिक्स में हमारे पास एक वैल्यू निकल रही थी और उसी के हिसाब से हमने फिर हर एक की एक आइगन वैल्यू भी निकाल लिए और एक आइगन वेक्टर भी निकाल लिया. These eigenvectors are orthogonal to each other and will make a set of dimensions for the new data. ये जो वेक्टर्स हम निकालते हैं, all of these are perpendicular to one another, ठीक है. that is given और that is a must कि हर आइगन वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है. इस तरह से you get the maximum information. One of the rules is that when you have dimensions in perpendicular to one another, that's how you achieve the maximum amount of information, and that's what we are trying here, where the magnitude of each of these values corresponds to the variance along that new dimension, ठीक है. इस आइगन वैल्यूज वाले वेक्टर से हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी एक डिमेंशन की डाटा स्प्रेड कितना है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी वेरिएंस कितनी है, ठीक है. दैट्स एग्जैक्टली हम what we were trying to achieve. हम अपनी पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट उसी डिमेंशन में बनाना चाह रहे थे जिसमें हमारे पास मैक्सिमम वेरिएंस या मैक्सिमम स्प्रेड थी. So that is being received या achieved by this eigenvalue. This would tell us कि in which direction do we have the maximum variance या सबसे ज्यादा डाटा का फर्क कौन सी डिमेंशन में पड़ रहा है, और फिर हम वो डिमेंशन अपनी स्टोर कर लेते हैं बाकी की प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है. We call that feature as an important feature since that is giving us the maximum spread of data. Once we have these values for all of our features, हमने अपने सारे features के corresponding निकाल लिए, जितने original features थे उतने principal components निकाल लिए. फिर हम क्या कर सकते हैं, we can sort these principal components according to their eigenvalues. Since eigenvalues tells you the strength of your variance or how much the data is different from one another. So sorting those would give you the first one would be with the highest spread, the second one would be the next highest, and so on and so forth. So sorting this gives us the important ones at the top and the non-important ones or lesser important ones towards the bottom. And that's what we wanted. We wanted to see कि हमें कौन सी इस तरह के फीचर्स देखने हैं या वी नीड टू कीप देम जो हम लोगों को ज्यादा डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. दैट आर मोर इम्पोर्टेंट टू अस, ठीक है. एंड वंस वी हैव सॉर्टेड देम, फिर हम ऐसी के डिमेंशंस उसमें से निकाल लेते हैं दैट हैव द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू. टोटल नंबर ऑफ डिमेंशंस जो फीचर्स के साथ थी दोज वर n, और उसमें से ये टोटल हमारे ओरिजिनल फीचर्स में से. एंड वी इस सारे के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने टोटल के डिमेंशंस बना ली, पीसीए की डिमेंशंस जितनी थी, और इस पीसीए की डिमेंशंस में से वी सिलेक्टेड एनी के डिमेंशंस दैट वाज वेयर के इज मच लेसर देन n, ठीक है. तो हमने क्या किया कि पहले सारे फीचर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पीसीएस बना ली, और फिर उस पीसीएस में से जो खाली इंपॉर्टेंट वाली थी के डिमेंशंस जो हमने सोर्ट करके अंदाजा लगा लिया था कि दीज आर द गुड वंस, वी स्टोर्ड दोस एंड वी लेफ्ट आउट द अदर वंस. ग्राफिकली आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस कि ये ओरिजिनल आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, और ये डाटा का स्प्रेड है, और इस स्प्रेड की बेस पे हमने ये एक आइगन वेक्टर निकाला है और इसी तरह दिस दिया था वन. और इसकी जितनी ज्यादा स्प्रेड होगा, जितना ज्यादा उतनी मेरी आइगन वैल्यू लार्जर निकलेगी.